5. It's Dr. Abhishek Prince Sota, and today we're discussing Class 10 Science chapter Our Environment. Thank you very much for tuning in. And the very important chapter in terms of our board examinations are concerned, and CBSE has led this in our class 9th and class 10th. So the chapter is called Our Environment. So it's really an important chapter in terms of the syllabi as it's concerned, and it has a good weightage also. It surely comes for a good number of marks, like 4 or 5 marks. So there are a plethora of chapters in class 10th. So ये जो chapter specifically 4-5 marks का आता है, so you can easily expect 2 questions out of maybe the entire 13 to 14 questions in the board exam. You will get 2 questions from our environment. और अगर ये 4-5 marks का एक चैप्टर है, so it will be deconstructed as a one long question and a one short question. और MCQs mostly काफ़ी आते हैं, and from the ecological perspective also this chapter is extremely important. So we do things at our environment, and I guess it was the festive time, and we also need to reschedule the classes to early morning, like maybe the students can join in before getting to their school so that their time is saved. But anyhow, we are saving all our live streams on our exclusive channel, on my own personal channel, so you can always avail. And even as we start this batch, so students can always visit our offline center at Dhali. We are based like the Palace of Words is placed close to the tunnel and at the Secret Hearts Road. So we are there. You can always avail the early morning offline classes also in case students want to also enroll online. So we have like a special segment of unlisted videos on our channel where you can avail the benefits online and be benefited by the Brahmarit batch. So what is our environment? That is the prime question. And yes, let's just without further ado, let's begin and talk about our environment. पर्यावरण क्या होता है? So let's do this पर्यावरण talk, and as a moment of silence for the state, for the country, the monsoons, the torrential downpour just incurred a lot of havoc. मतलब इतनी बर्बादी हुई है इन बारिशों में. So hello brother Mr. Sagar, thank you very much for joining this stream, and love from India always. I'm Dr. Abhishek Prince Sohta, and here at the batch Mahurat, and we are doing class 10, our environment chapter, in terms of our board's perspective. और मैं यही बात आप सभी को भी बता रहा था कि जो ये मानसून्स थी, दे क्रिएटेड हैवक इन आवर कंट्री. कई कई जगह अभी जो उत्तर काशी में हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखद है. हिमाचल में बहुत कुछ हुआ, मंडी में. और ये हमारा एनवायरनमेंट का एक मेन एसोसिएशन है, और एनवायरनमेंट हम ही लोगों से बनता है, हमारे समाज से बनता है. तो हमने एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी ऑर्गेनाइज की है पैलेस ऑफ वर्ड्स में. तो आप प्लीज आइए. आप अगर शिमला में रहते हो, आप शिमला वासी हो, तो आप हमारे साथ ट्री प्लांटेशन ड्राइव में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले सकते हो. और यदि आप कहीं भी हो, एंड थैंक यू वेरी मच सागर जी, थैंक यू वेरी मच. इफ यू आर वॉचिंग दिस, hey Arvind, thank you very much for joining. So we have conducted a tree plantation drive, and अगर आप हमें एक ट्री फंड करना चाहते हो, एंड यू आर जस्ट फ्रॉम एनीवेयर, आप अक्रॉस इंडिया इस स्ट्रीम को कहीं भी आप देख रहे हो, तो यू कैन जस्ट फंड इट ऑन आवर पोर्टल. लाइक यू कैन फंड अ ट्री. आप कमेंट सेक्शन में यू कैन से फंड अ ट्री, और आप हमें यू कैन जस्ट गिव लाइक योर इनोबलिंग कंट्रीब्यूशन एज पर योर विजन वेल. मान लीजिए आप कहीं दिल्ली में हो, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको टाइम नहीं है, आपका एक कॉर्पोरेट जॉब है, या आप शिमला के आसपास नहीं हो, आप हिमाचल में नहीं हो, सो यू कैन जस्ट फंड अ प्लांट फॉर अस. So this palace of words fund a plant is there to empower and help our environment get better. तो जो उसका मैं आपको लिंक भेजता हूँ हमारे फंड अ प्लांट इनिशिएटिव का, that will help you know more about it. And ये आई गेस एक कॉमन बिट है जो हम कर सकते हैं for the sanctity of our environment.
सो मैं आपको अपना नंबर भेज देता हूँ. And if you are keen, you want to fund a plant, and you know the environmentalists, you know the environmental groups, so you can just pull in and you can tune in and fund the plant for us. And I'm just sharing my number on the comment section, like, so that's our Palace of Words exclusive Google Pay number. So you can please fund the plant for us. Let's just be there, and let me join the stream through the device, and then accordingly we can begin this fund a plant initiative, and we can just take this forward. So this would just be like a minute and moments before starting our environment, and then we can take this revolution and the initiative forward. And I guess environment needs to be safeguarded and protected, because ये बहुत important है that we really act. So let me just begin and put this forth. Like, I'll kind of share this right here on the stream. So funding the plant is the thing. And Abhi, please, you can tell us your measures and the means as to how you would like the environment to be. And yes, we are just there. And so, in the Fund the Plant project, Fund the Plant initiative by the Palace of Woods. So this is like a specific initiative, and across the globe you can come up and you can fund the plant. So basically our number is there, it's flashing on screen. It's 78075575619. Because a little help goes a long way. The main agenda and the idea is, since it belongs to us, our environment belongs to our own selves. And by funding a plant, we help it grow, we help it nurture. So the idea is, wherever you're in the world, in the different and the beautiful part, you can just fund us. You can fund our environment, and you can just make it better. You can make it brilliant, and you can make it more beautiful. So fund the plant today and just create magic in the world. So, in case with this, the Palace of Words initiative of funding my plant, you can always help us. You can reach out. You can be charitable at our official account of the Palace of Words. And you can UPI your money to this specific contact number, +91 78075 57619. So fund your plant today, and we begin with our environment. So, what is our environment? That is my key question to you, and I would also be waiting for your responses. Thank you very much for tuning into the stream. So, what is environment? Come on, you have to give that specific definition right now. What's environment according to you?
Environment is extremely important, of course. All that surrounds us is environment, and environment have different various basic force. And it is also something that needs to be safeguarded. So yes, have the electricity back, and yeah, the vision is clear, I guess, and even expecting I'm loud and clear. And we have one gentleman attuned in the stream, so hope I'm audible, loud and clear. You can type a yes on the comment section too. And yes, we'll just begin this straight up. So I'm just kind of tuning in the location. And we have the related video. So I'm just creating an outreach for my digital initiative. The- So creating this outreach about the tree plantation drive. So let's create a poster about funding our plants. All right. So let's just take it places, and we can surely make it happen in the best ways possible, and we can fund it, we can fund the plant. And yes, let's begin with the class. What is our environment? That is the that's the real deal.
So basically, all that surrounds us is environment. That's something we totally know of. So let's read further about it. Let's just see, how it is and what are like the important aspects. So we, get into it straight now. We've been waiting for these specific people to join in and people to be tuned. So this is like basic mean. So yes, let's basically begin, I guess. And that is the main idea and the agenda so far. And today we do our environment. And yes, I guess without further ado, let's begin. We've been waiting for the longest time now. So all that surrounds us is environment. That is something, we all have to know in, the most basic of its sense, that we basically know what our environment is. So it's important to safeguard whatever surrounds us. So, please make sure that we just kind of, make it better, and we kind of, learn and grow and evolve in the right sense. So that is what matters. So now, basically, if we talk about the quick introduction, so environment refers to the surrounding of an organism where it thrives. Rightly said, it constitutes both living and non-living things, that is physical, chemical, and biotic factors. Here in this chapter, we will learn about various components of our environment, their interactions, and how our activities affect the environment. Because everything we do has repercussions on our environment. So we really have to kind of take this momentum places. We have to learn to love our environment, to nurture it, to make it better. This is the main plan at times. So that is one real deal about environment. So that's something, that needs to be specific, and we really have to nurture and kind of maintain it, and we have to kind of, grow, and we have to make it better always, right? We have to safeguard our environment.
So the main aspect is, I guess, bettering things up, making it better. And we also talk about the ecosystem now. What basically is, the environment, what is the ecosystem? Let's just, talk about it in greater details because we've already talked about the impact that it has, right? And thank you very much. Hope your subscriptions are done and you're here joining the stream. Advik is here. Welcome, Advik. The king of palace of words. And Advik, I'm keen, kindly share the reel to the world. Put the link to your reel here, which already has maybe close to 5,000 views now. So Advik is an online sensation now, and our brightest offline student also, and now a mountain biker. So we're doing our environment, a topic which is very important as far as your class 9th and 10th are concerned. And just keep tuning in to the stream. And yes, I guess if you are like injured due to like a ride, please recover, please be safe, please be secure, and safety is the prime. We'll also go on the youth day ride, and today I would also like to tell you about fund a plant initiative, Advik, that we are carrying out at the Palace of Words. We are all going on a tree plantation drive on the 23rd of August 2025. So we could also do the bike and plant initiative, and we are also now willing to have the support of all our students, our offline community in Shimla, Solan, Chandigarh, all the people who can join us on the drive in Shimla physically, and even the ones who cannot join us. It's on Saturday, I guess. Saturday, 23rd, after the Independence Day. We have time right now. Today it's 11th, so we have, 10, 11 more days to go. So that'll be a Saturday. And we'll surely tune in. We'll chalk out this great campaign. And maybe if Sunday could also be done, we can plan it on a Sunday also, since Sunday will have more traction. So 23rd of August is also my name day. So I'll be turning 30 this 23rd of August. So I want to do it especially on the 23rd of August only. And all the people who are elsewhere across the globe, so you can fund a plant. Like since you cannot be here physically, and then accordingly, yes, Advik, I'll surely get it done in case it has caused you some injury, which I'm really, sad and somber about. So, that's a deal. The repair thing has to be initiated now. And yes, we'll do that. We'll get it done. And since you all can join us, as I'm telling you about the Fund the Plant initiative. So, you can fund the plant. You can, come and reach out to Palace of Words, and whatever amount of money that you give us will ensure that, you have like your plant raised up on your name and we're taking good care of it. Because one thing is like a sapling you've planted that's there for a while. Taking good care of it initially is also important. So we'll be doing this maybe bike and plant initiative, cleanliness drive initiative. So we'll surely get it done. We'll, take it places. This is for sure. This is for real. We are going to do it. We are going to make it happen. And, let's plant the, let's, take care of our home. Let's plant the earth green because environmental disasters can only be, secure when we are doing the right things, when we are taking good care of our environment, then things always get better. There's always a good way to get things done. So that is the real deal, always. So let's take this endeavor and the initiative forward, and let's just do the best that we can do. So now to our environment, as we've discussed that it has some repercussions, like whatever we do, the people and the students on the stream, we now do ecosystem. So what is ecosystem? You have to tell me that accordingly, what ecosystem is. What is ecosystem?
So you really have to, get through it. So come on, just define ecosystem. What is it? And we, get forward to it. And we have like one individual who's joined, and then what is ecosystem? Okay, 16 it is. Advik, on 16th we'll go on a ride, and you recover, and I just, pray that you get secure soon. And it's about the safety. And yes, even there had been some great serious travels of slumber, and I just, slept midway of my travels yesterday. It has caused you inconvenience, and I apologize on my stream itself that I just couldn't access, and I saw like umpteen of your calls. And let's plan if we can take it on series. Maybe we can go on 16 also, 23rd also, because we are now commemorating the Van Mahotsav week. So let's actually make it happen. Let's take it places. Let's take the Van Mahotsav places. And yes, let's secure our environment. That is the most important and the aesthetic and the most beautiful thing there we can do. So ecosystem now, Advik, please tell what ecosystem is. Let's talk about ecosystem in the greater detail. What is ecosystem? So basically, if we break down ecosystem into two words, eco and system. So system is like a process that is like there. System is extremely important. And ecology is always related to our environment. So let's now, get into the details and the definition. And, one thing I want to tell you, students, is that, always go by the book. So that is extremely important. So that's what ecosystem is. So take, good care of the ecosystem. That's something that's really important. And we also get to the details of it. We talk about it in the greater detail. So we have to kind of take it places. And all we now do is the ecosystem. We talk about it. So, now we talk about this definition, and the thing that I was telling you that, please go by the book. Now, students, going by the book is the most important thing. That you always have to write something that is in the book. You have to use the keywords. This is really important and significant. So please do that. Please come up and take notes also. Use the keywords that is, of utmost prime. Because obviously, अब sciences है तो we have to be logical. Even social sciences है for that matter. वहाँ पे हम कुछ वही लिखेंगे ना जो कंटेक्चुअल चीज है. हिस्ट्री कैन नेवर बी ऑल्टर्ड. भारत 1947 में आजाद हुआ था तो 1947 है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं. उसको हम 1975 नहीं कर सकते हैं, 2025 नहीं कर सकते. वो इतिहास है, वो लिख दिया चुका है. सो बहुत जरूरी है कि हम अपनी टेक्स्ट बुक से जुड़े रहे और जो टेक्स्ट बुक्स में है उसे अपने एग्जाम में लिखे. दैट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट्स. So now talking about ecosystem, whichever goes in the book. And as such, आप जब हमें ज्वाइन करते हो और आप स्पेशली जब नोट्स बना रहे हो तो स्टूडेंट्स से यही एक अनुग्रह है, यही एक आग्रह है कि आप अपनी नोटबुक्स के साथ आइए.
पेन और पेपर शुड बी ऑलवेज हैंडी एंड यू शुड बी टेकिंग गुड नोट्स. हिंदी में है, इंग्लिश में है, एंड अगर कुछ आपको लगता है कोई कंसेप्ट को आप जानना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो. एंड प्लीज कीप शोइंग ग्रेट सपोर्ट ऑन द कमेंट सेक्शन. And keep loving us, keep showering your love, and let's talk about ecosystem. So let's see how our book defines ecosystem. The ecosystem comprises all the biotic and abiotic factors interacting with one another in a given area. So बहुत अच्छी एक बात बोली है कि अब जैसे बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स है, ये यहाँ पे कीवर्ड है कि इकोसिस्टम हमारे एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स का इंटरैक्शन ही है हमारे एरिया में. सो अब हमारे पास यहाँ कीवर्ड्स आ गया है बायोटिक और एबायोटिक, उनका एक इंटरैक्शन इन आवर एरिया. तो जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो और आप चाहते हो उसे लॉन्ग टर्म अच्छे से याद करना, बी वेरी कीवर्ड स्पेसिफिक. Like you just have to see that okay, we're talking ecosystem, and in the ecosystem we have abiotic factors, we have biotic factors. So here abiotic basically is something non-living, you can consider. Biotic is living. हमने अपनी जूनियर क्लासेस में बड़े अच्छे से ये कंसेप्ट किया हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स का, लिविंग और नॉन लिविंग के कंसेप्ट का. सो व्हाट वी टेक्निकली डू इज we always ensure and remember that here the main agenda is knowing your keywords. कि अब इकोसिस्टम एक इंटरैक्शन और कोरिलेशन होता है हमारे जो एनवायरनमेंट में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का. जैसे इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. हम पैक्ड फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है एक फूड आइटम को, तो वो जो फूड आइटम है वो एक बायोटिक सोर्स है, लिविंग सोर्स है. एंड जो पैकेट है, जो प्लास्टिक का पैकेट है या पॉलिथीन का पैकेट है, वो एक एबायोटिक, एक नॉन लिविंग सोर्स है. सो वो हमारा एक इकोसिस्टम है प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड का. या मे बी हम इवन फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रिंकल करते हैं. सो दैट इज अगेन आवर इकोसिस्टम, कि पैकेजिंग इकोसिस्टम हमारा. क्योंकि एक सिस्टम इज इंपॉर्टेंट. आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम. That's extremely important to have a vivid and a defined system. And ecology is all about our environment, biotic factors, abiotic factors, क्योंकि हमारे environment में living entities है, नॉन लिविंग एंटिटीज भी है, और इसी की कोरिलेशन को इकोसिस्टम कहा जाता है. एंड हियर वी आर देयर टू सिंप्लीफाई. और यहाँ इस स्ट्रीम का एक एंडेवर यही है कि स्टूडेंट्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. सो एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट से ये है कि दे जॉइन अस लाइव. ये रिकॉर्डेड सेक्शंस यूट्यूब पे हमेशा होंगे हमारे पैलेस ऑफ वर्ड्स के ब्रह्ममुहूर्त बैच के लिए. सो यू कैन ऑलवेज अवेल इट्स बेनिफिट. अगर आप लाइव भी नहीं ज्वाइन कर पाते हो ड्यू टू रीजन दैट यू आर ऑफ टू स्कूल एंड यू आर जस्ट मूविंग, सो यू हैव टू जॉइन इन एंड ट्यून इन as per your stream, your live stream is considered. So this is of, the prime importance. You have to ensure that your particular specific stream is done in the most fruitful and the soothing way. That is that is what matters most in the first place, right? So this is the real deal. You have to be very wary about it. You really have to take care of these factors governing our environment. So अब हम क्विकली बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की, इनमें क्या क्या चीजें आती है. सो एबायोटिक है तो एबायोटिक इज नॉन लिविंग. स्पेशली कोई प्लास्टिक हमारे पास आ गया, दैट इज नॉट अ लिविंग एंटिटी, दैट इज एन एबायोटिक factor. So any specific thing which is not decomposed is abiotic. It would be like plastic. अब जैसे wood है, so wood जनरली तो एक बायोटिक फैक्टर है, ट्री है, बट एक स्पेशली अगर डिकैपिटेटेड वुड है तो उसे भी एबायोटिक फैक्टर में हम कंसिडर कर सकते हैं. बट वो डिकम्पोज हो रही है तो नहीं, वो फिर बायोटिक है कोई. बिकॉज साइंस हैज अ लॉजिक एंड रीजन टू एवरीथिंग. साइंसेस में क्या होता है दैट एवरीथिंग हैज टू गो बाय स्टर्न लॉजिक. अब जैसे हमने एक ये प्रिंसिपल पढ़ा कि जो एबायोटिक फैक्टर है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, तो अगर हम वुड को लेंगे, वुड एनी वुड बी अ बायोटिक फैक्टर, वो डिकम्पोज भी होता है.
विदरिंग होती है। जैसे वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। आपने ये बहुत पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक्स में। इनिशियली आई गेस फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट स्टडिंग दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उस यूनिवर्सल सॉल्वेंट को आपने एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि उस एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट में हमें ध्यान रखना है कि वाटर कैन डिसॉल्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग इनटू इट। सारी चीज़ें टोटली डिसॉल्व हो जाती है। सो दैट इज एग्जैक्टली वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक बायोटिक फैक्टर है। सो मड लाइक सॉइल हमारा एक बायोटिक फैक्टर है, राइट? सो यस, लेट्स read it further. Let's see what the scenario is. The ecosystem comprises all the biotic and abiotic factors interacting with one another in a given area. बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात है हमने जो डिस्कस कर ली है। बायोटिक components include all living organisms such as plants, animals, microorganisms, and humans, etc. And abiotic components include sunlight, temperature, air, wind, rainfall, soil and minerals, etc. Example, pond ecosystem, grassland ecosystem. So ये एक difference है about biotic and abiotic factors. Please have your pen and paper with you. बहुत ज़्यादा important है कि आपके पास आपका pen और paper हो, and the dedicated students who join us live during we are live, please keep taking notes. I really, come here with this thing that, it makes the life of our students easier, the lives of our kings and queens easier. कि आप अच्छे notes ले पाओ in case you're not able to join this stream due to any specific reason. So it's extremely important that you come online. You learn from us, you join the session, and such a beautiful medium online is. आप इस स्ट्रीम को पूरी दुनिया में से कहीं भी देख पा रहे हो, तो इट विल रीच यू आउट, एंड लेट्स मेक इट अ वेरी फ्रूटफुल endeavor at the Brahmahurit baths at the Palace of Words. So अब इकोसिस्टम का एक there's a very wonderful chart dedicated about ecosystem. उसमें abiotic factors है, biotic factors है, and जो biotic factors are even further classified into the producers, consumers and decomposers. और कंज्यूमर्स में एक अगेन सेग्रीगेशन है इनटू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। सो अब अगर हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की, वहां पे हम देख चुके हैं दैट बेसिकली एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, wind, rainfall, soil and minerals. That example is the pond ecosystem, grassland ecosystem. ये abiotic factors है हमारे. We are thorough with the abiotic factors. और हम अगर बायोटिक फैक्टर्स की स्पेशली बात करते हैं, सो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। हमारे पास एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, और एक होते हैं कंज्यूमर्स, और एक होते हैं डीकम्पोजर्स। सो प्रोड्यूसर्स बेसिकली इज अ फूड, द प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे लिए कुछ एक एनर्जी गिविंग सोर्स को क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है, लाइक प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसर्स। एंड कंज्यूमर्स है हम लोग जो इन प्लांट्स को खाते हैं, जो सब्जियां है, जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हमारे लेंटिल्स है, दालें है, उसे हम खा रहे हैं। वी आर द कंज्यूमर्स। और फिर जो स्पेसिफिक ये चीजें हैं जो ये डिकम्पोज होके फ्यूल बनता है, मैन्योर बनता है, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आवर एनवायरनमेंट इज लाइक सेल्फ सस्टेनिंग। हमारे एनवायरनमेंट में ही इतना पोटेंशियल है। वी हैव द सनलाइट एज एन एबायोटिक फैक्टर। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स ने खाना बनाया, वो खाना हमने खाया, एंड एज सच उसके बाद फिर जो एक्सक्रीट भी किया एनिमल्स ने, ह्यूमंस ने, वो एक एक्सक्रीटा को प्रोसेस किया माइक्रोब्स ने, डीकम्पोजर्स ने, और वो एक मैन्योर बना बैक टू सस्टेन द फार्मिंग। सो प्रकृति बहुत ही विविध है, और प्रकृति बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सस्टेनिंग भी है। सो नथिंग इज मोर मैजिकल देन आवर एनवायरनमेंट, एंड टू प्रोटेक्ट इट बाय ऑल आवर मीन्स एंड सेफ गार्डिंग इज द रियल डील. We have to safeguard our environment at all times, at all costs, to make this world better. And yes, together we can strive.
Together we can build this world better, beautiful, and divine. So let's, do that. Let's create some beautiful endeavors and initiatives, and let's take action. आजकल हम देखते हैं सभी जो हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, एंड जो सभी सोशल मीडिया पे है, सब बड़ा शोक आघात जताते हैं जो हुआ है, जो इधर अभी जो बहुत सालों पहले जोशीमठ पे जो हुआ था, जो अभी उत्तरकाशी में हुआ, जो मंडी में हुआ। और बहुत लोग कह रहे हैं कि हिमाचल नक्शे से बाहर हो जाएगा, कि हिमाचल नक्शे में नहीं होगा, जो कि दिख भी रहा है। तो शोक जताना, बुरा उसका लगना एक बात है, पर उस पे काम करना एक अलग बात है। We really have to work for it. We really have to kind of do it. We really have to take things places. हमें काम करना पड़ता है, अच्छी सच्ची मेहनत करनी पड़ती है कि कुछ चेंज हो। तब हम उसे और ज़्यादा प्रोफाउंड और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ऐसी इंडेवर्स को, ऐसी चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचें। And environment is our home eventually. If we see it in that broad spectrum of life, हमारा घर है, हमारी धरोहर है, हमारा environment, हमारा पर्यावरण। तो इसकी रक्षा करना भी हमारा सर्वप्रथम उत्तरदायित्व होना चाहिए। Let's secure and safeguard our home. So हमने consumers पढ़ लिए, primary, secondary and tertiary। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे हैं उसमें आते हैं हर्बिवोर्स। अब टाइप ऑफ कंज्यूमर्स की हम अगर बात करें, सो हर्बिवोर्स आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो लोग हर्ब्स खाते हैं, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, जो प्लांट्स पे सर्वाइव करते हैं। एंड हमारे फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स लाइक अस पीपल, अगर जो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, दे आर द प्राइमरी कार्निवोर्स। एंड हमारी टर्शरी कंज्यूमर्स है, हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स, हमारे एनिमल्स हु फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो मांसाहारी जो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, दे आर द टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। ये एक फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट आपको पक्का आ सकता है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑफ utmost important. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो न्यूट्रिशन एक खुद में ही चीज़ है, कहते हैं ना बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए, एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन की सही मात्रा हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, रफेज हो, फाइबर हो। सो इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इन प्लांट्स, सो लेट्स सी हाउ इट डिफर्ड. Autotrophic and heterotrophic are the two modes of nutrition in living organisms. Plants and some bacteria are autotrophic as they make their own food. तो हम जब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक फूड की, तो प्लांट्स, बैक्टीरिया जो अपना फूड बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जैसा नाम है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है कुछ चीज ऑटोमेटिक। सो प्लांट्स प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर autotrophic. They make their own food. And animals, fungi, and some bacteria are heterotrophic as they derive their food from the other organisms. और heterotrophic जैसे हम humans हैं, हम है heterotrophic क्योंकि हम किसी और ऑर्गेनिज्म से या किसी प्लांट से अपने फूड को डिराइव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, द ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं सैप्रोफाइट्स और डीकम्पोजर्स की। व्हाट आर सैप्रोफाइट्स, व्हाट आर डीकम्पोजर्स? लेट्स सी। सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, दैट इज फंगाई एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जो डेड और डिकेड एनिमल्स पे, फूड मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे फंगाई है और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स. Decomposers break down the organic matter or waste material and release nutrients into the soil. For example, bacteria, worms, slugs, and snails. ये सब decomposers हैं. They are considered extremely important in soil biology. Soil biology एक बड़ी vivid और deep term है, इस पे बहुत researchers ने research कर दिया है, because हमारा soil अगर healthy होगा तब उस पर हम grow कर सकते हैं, उसमें हम plantation को nurture कर सकते हैं। और मैं खुद एक बागबान हूँ, तो हमें अपने सॉइल का ध्यान रखना एक बड़ा ज़रूरी विषय है
कि हम समझे कि हमारी सॉइल बायोलॉजी को हमने बहुत खराब कर दिया, बड़ा तहस नहस कर लिया है। तो सॉइल बायोलॉजी शुड बी गुड, it should be favorable, it should be fruitful to take this green revolution further ahead. And अब हम हिमाचली है तो हम सभी बागबान हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सॉइल को सेफ गार्ड करें, सॉइल को नर्चर करें, एंड थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऐसे सस्टेनेबल फार्मिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मॉडल्स पे, परमा कल्चर पे फोकस करें और बेटर बनाए अपने एनवायरनमेंट को. दैट शुड बी आवर प्राइम गोल, राइट? So now, the bacteria, worms, slugs, and snails break down the complex organic matter into simpler substances that are taken up by the plants for various metabolic activities. So they are saprophytes. So that is the main deal about it. So अब आते हैं abiotic components. So अब हम abiotic components की बात करेंगे. And ये जो notes है, I'll be sharing on the link with you all so that आप इसे avail कर सके. I'll also put it there in the description because बहुत बार हम जब online एक session पे होते हैं या फिर for that matter एक online class पे होते हैं तो interaction ऐसे limited हो जाती है, जैसे students comment तो हमें कर सकते हैं but maybe हम एक topic के बीच में हो तो we cannot reply, or there's a certain thing like that. So uske liye offline batches is a solution. The offline batches at the Palace of Words, we are just teaching close to the tunnel, Dhali tunnel, and you can always reach out. हम early morning batches हमने start कर दिए हैं, हमारे पास afternoon batches भी है, evening batches भी है. So avail the benefits of these batches. And now the abiotic components. Non-chemical and physical components of the environment like the soil, air, water, temperature, etc. are abiotic components. And the biotic components are the living organisms of the environment like plants, animals, microbes, and fungi. So ये सब हमारे पास abiotic और biotic components होते हैं. Now we talk about trophic levels. एक energy specific level होता है, हम उसे कहते हैं trophic level. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट चेन की बात करें कि एक बकरी ने घास को खाया और उस बकरी को शेर ने खाया, तो ये एक फूड चेन है. ऐसे ही प्रकृति बनती है एंड इवेंचुअली वो शेर अपने कर्मों की वजह से किसी और नाजुक जानवर को अटैक करते हैं, क्योंकि शेर एक कार्निवोर है, उनका इनहेरेंट नेचर है, शेर मांस खाता है, घास नहीं खाता. तो वो शेर को जब कर्मों का फल मिला, शेर की मौत हो गई, और वो जो शेर की बॉडी है उस पर स्कैवेंजर्स ने एक्ट किया, वल्चर्स, हॉक्स, ईगल ने उसे ब्रेक डाउन किया, उसे डिवार किया उसकी बॉडी को. एंट ने, वो एक स्पेसिफिक एंट्स आई, उन्होंने उस चीज को स्पेसिफिकली नर्चर किया, और उसके बाद फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि वो वहाँ पे सॉइल बायोलॉजी फिर स्टार्ट हो गई कि ऐसा जो शेर की ऑर्गेनिक बॉडी थी दैट गॉट डिकम्पोज्ड, इट बिकेम लाइक अ मैन्योर फॉर द सॉइल, और वहाँ पे फिर कुछ पेड़ पौधे पत्ते कुछ उग गए एंड एक फॉरेस्ट बन गया. सो दैट्स द सर्कल ऑफ लाइफ, और यही कर्म है, राइट? वन थिंग लीडिंग ऑन टू अनदर. जैसे कहा जाता है ना कि स्पेसिफिकली it's like a bird, which eats the ants. But as soon as that bird die, it's the ants that eat that bird again, और उस body पे वो act करती है, उसको decompose करती है. So this is the cycle of karma. That's what our environment is about. Our environment is about the cycle of karma itself. And अब हम देखते हैं trophic levels exactly क्या होते हैं. It refers to the various levels in a food web as per the flow of energy. The different trophic levels are producers, that's also called the T1. जैसे कि मान लो सनलाइट की प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वो पहला ट्रॉफिक लेवल है, दैट्स द प्रोड्यूसर्स, T1. प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बिवोर्स, दैट इज T2. अब जब वो घास है वो तो बन गया है, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, उस घास को बकरी ने खाया है, ग्रेजिंग एनिमल ने खाया है, दैट इज द ट्रॉफिक लेवल 2. वो प्राइमरी कंज्यूमर है, वो ग्रेजिंग एनिमल. सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
जो प्राइमरी कार्निवोर्स है, अब मान लो ह्यूमंस है जो नॉन वेजिटेरियनिज्म पे होते हैं, या फिर एनिमल्स है जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, सो दैट इज द थर्ड, मतलब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल फूड चेन पे। कि मान लो मांस है, किसी इंसान ने उससे खा लिया, किसी जानवर ने उससे खा लिया, तो वो हमारे पास T2 हो गया, प्राइमरी कार्निवोर। एंड टर्शरी कंज्यूमर्स आर द टॉप कार्निवोर्स, C3। कि मान लो अगर हम लोग मांस खा लेते हैं, तो शेर तो हमारा मांस भी खा सकता है, तो वो शेर हमारे टर्शरी कंज्यूमर है वो, मतलब फिर हमारे पास टॉप कार्निवोर है, तो वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा। एंड फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर्स है, लाइक जो हमारे पास एक कार्निवोर है, फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर्स। फॉर एग्जाम्पल अब एक बॉडी है वो डिके हो गई, एक वो गोट हो सकती है, वो लायन हो सकता है, एंड उस पर हॉक्स ने, स्केवेंजर्स ने, ईगल्स ने, उन्होंने एक्ट किया, वल्चर्स ने एक्ट किया, तो वो है हमारे पास टर्शरी कार्निवोर्स, वो क्वार्टरनी लेवल हो जाता है। और फिर जब वो बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, डिवार हो चुकी है, तो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, उस पर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, एंट्स, स्लग्स, वर्म्स, ये सब उस पर एक्ट करेंगे और उसको पूरा डिकम्पोज कर पाएंगे। तो एक फूड चेन भी इतना प्यारा सा एक सर्कल बता सकती है। सो हाउ मैजिकल एंड विविड एंड ट्रू इट इज, राइट? सो अब देखिए पिरामिड्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल, अब इसमें हमारे पास पिरामिड्स भी होते हैं। सो इट जस्ट सेज कि द पिरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली हम पिरामिड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक पिरामिड के बेस पे होगा प्रोड्यूसर, उसके बाद फिर पिरामिड लेवल अप होगा टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद वो लेवल अप होगा टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन लेवल अप होगा टू द टर्शरी कंज्यूमर्स, राइट? Or the pyramid of the trophic level can be the pyramid of numbers, the pyramid of biomass, or the pyramid of energy. All the pyramids start with producers. So we have to always remember that it starts with producers. And एक होता है pyramid of numbers. It gives the number of organisms present in each trophic level. It can be upright or inverted. So वो numbers बता रहा है कि कितने as such organisms included है, जैसा बात है, जैसा उसका नाम है, it's a pyramid of numbers. Then there's a pyramid of biomass. So now in the pyramid of biomass, it gives the biomass of each trophic level and could be upright or inverted. So बायोमास के बारे में बताता है एक ट्रॉफिक लेवल पे कि कितना बायोमास हो सकता है वो। एंड अ बायोमास इज अबाउट लाइक द लिविंग एंटिटीज, द लिविंग बीइंग्स। एंड देन द पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के बारे में बताएगा। इट ऑलवेज अपराइट, इट्स ऑन द टॉप, एंड एज इट शोज the flow of energy from one trophic level to the next trophic level. Obviously, energy flows हमारे होते ही है, and it's said that जो herbivores होते हैं या primary consumers होते हैं, they get the most benefit out of the food they have. So आप vegetarianism opt कर सकते हो, it'll also make you live healthy and live longer. Now in a day and age we have umpteen of options to choose from. हमारा vegetarian course is so vivid, हमारे पास इतनी diverse ranges है, इतना अच्छा courses है, तो हमें ज़रूरत नहीं है अब मे बी नॉन वेजिटेरियनिज्म को ऑप्ट करने की, बट ईच टू हिज हर ओन। मैं तो बस एक एडवाइस कर सकता हूँ, इट्स अबाउट द पीपल what they have to choose from, because हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे 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 एनर्जी बढ़ती जाती है तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एंड डोंट वरी, अभी आई एम ट्राइंग कि हम अपनी स्ट्रीम्स को थोड़ा और विजुअली एंगेजिंग और स्टिमुलेटिंग बना पाए, बट आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। Now we talk about the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed. Rather, it transforms from one form of another. So, एक law of conservation of energy ये बोलता है, very important from the examination point of view, that energy can neither be created nor destroyed. Rather, it transforms from one form to another. And in the biological systems, it get passed from one generation to another across trophic levels. So that is about the law of energy, of the law of conservation of energy. और हम बात करते हैं energy flow की. So now the transfer of energy from one trophic level to another, depicting its direction and amount, is the energy flow. It can be represented by the pyramid of energy,
And in any food chain, only 10% of the energy is ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. जो हमने 10% लॉ की बात की थी, ये एक हाईलाइट आप कर लीजिए, एग्जाम में आने के चांस है 10% लॉ के. दैट इन एनी फूड चेन ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम one trophic level to another. So this is very important in terms of your examination point of view. नाउ अब हम बात करेंगे फूड चेन की, जो हमने बहुत विविडली अब डिस्कस कर ली है. एंड दिस इज वन प्राइम टॉपिक, ये एग्जामिनेशन में आ जाता है. A series of organisms, each dependent on the next as a source of food. That is what food chain is. That is how we can define it. And ये काफ़ी important है in terms of our aspect of how we are डीलिंग और क्या हमारा एनर्जी लेवल है. आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन. आप लिख सकते हो अगर आपका पेन एंड पेपर है. फूड चेन इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड. राइट. तो अब देखिए फूड चेन कैसे कि वाटर था, इट हेल्प सम प्लांट्स ग्रो, लाइक प्रोड्यूसर्स आए, ग्रास आया, बुशेज आ गई, फिर ग्रास हॉपर आया, प्राइमरी कंज्यूमर आया, एंड उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर एक ओमनिवोर आया, रैट आया, फिर कार्निवोर आया, टर्शरी कंज्यूमर स्नेक आया, उसके बाद हमारा टॉप कार्निवोर क्वार्टरनी कंज्यूमर एक हॉक या ईगल आया. So that's the entire food chain. And then we have the food web also. Let's dig deeper and see what food web is. Food web is formed by the interconnections of different food chains, and it is a graphical representation of who eats whom in an ecosystem. Who eats whom बड़ा important है ना, कि घास को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, शेर को उसके कर्म ने खाया. So who eats whom is a very vivid topic to be discussed. अब फूड वेब में क्या है कि एक there's like an interchange of many different food chains की. जो ग्रास है, ग्रास हॉपर उसे खाता है, माउस उसे खाता है, रैबिट उसे खाता है, और माउस को आउल खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को दोबारा आउल खा लेता है. तो खेल सारा कर्म का है. ग्रास हॉपर को बर्ड खा लेती है, बर्ड को स्नेक खा लेता है, स्नेक को हॉक खा लेता है, हॉक को उसका कर्म खा लेता है, रैबिट को फॉक्स खा लेता है. और दिस इज द मेन आइडिया एज सच. एंड फॉक्स तो बड़ा स्लाई होता है, स्लाई फॉक्स एक सियार होता है, उसे खाना मुश्किल हो जाता है फिर थोड़ा, मतलब वो चापलूस होता है, छुप जाता है उसे, फिर जिसे कोई ना खा सके उसे उसका कर्म खा जाए. ये हमारा फूड वेब. दिस इज द फूड वेब फॉर यू. And now we talk about the characteristics of ecosystem. Let's see, let's delve in deeper and talk about its characteristics. Ecosystem includes the summary of trophic levels, and their energy flow and pyramids are also included in the ecosystem. Let's see the characteristics of environment. It includes all living and non-living things. That is so true. All that surrounds us is our environment. In keywords को बड़ा याद रखना है आपने, right? And उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं. And unlike ecosystems, there need not be any necessary interaction between them. तो वही है, कई बार interactions होगी, कई बार नहीं होगी. And एक बहुत important topic है pollution. ये भी काफी examination point of view से बड़ा important topic है. So pollution is the introduction of harmful materials or pollutants into the environment. Pollution can be due to natural causes such as volcanic eruptions, forest fires, etc., or due to human activities such as carbon emissions, industrial runoffs, etc. So this is the definition of pollution. Pollution is like an important factor. इसका ना सीधा 3 marks या 5 marks का question आता है board exams में. So the types of pollution now, we have air pollution, we have water pollution, we have soil pollution, and we have noise pollution. तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का ये pollution होता है. So here we just talk about the air pollution first and foremost. Introduction of pollutants, organic molecules, or the other hazardous substances into the Earth's atmosphere. So its sources are like natural, forest fire, dust storms, and volcanic activities. ये air pollution को cause करती है. Man-made, like power, plants, homes, industries, oil refineries, and transportation.
So this is about air pollution, and I have certain links where you can get into the details of it. Ozone layer depletion एक बड़ा एक concern का topic है. The ozone layer protects the earth from the sun's ultraviolet radiations. The chlorofluorocarbons released into the atmosphere react chemically with ozone molecules and are depleting the layer. So that is about the ozone layer depletion. And the garbage management, waste management, very important. Hai? So it involves all the activities and actions required to manage waste from its inception to its final disposal. देखिए तभी cleanliness drives होती है, tree plantation drives होती है, waste management होती है. एंड हमें कुछ एक प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव बनाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है. पैकेजिंग में हम कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बना सकते हैं जहाँ पे चीज़ें बेटर हो, जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो. ये सारा एक आइडिया होना चाहिए. To manage waste from its inception to its final disposal. So now it ensures the environmental best practices are followed along with proper monitoring and the regulation. So the steps involved are अब waste management के कुछ steps है. Segregation of waste, collection, transport, treatment, processing and recycling and disposal. So ये हमारी सारी waste management है. Like दो methods of waste disposal है. उसमें landfills है, incineration है, waste compaction है, बायोगैस जनरेशन है, कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है. सो उसकी मैनेजमेंट इक्वली हो सके. सो अब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को देखते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं. वेस्ट इज डिराइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. सो जो प्लांट्स या एनिमल से वेस्ट डिराइव हो पाए वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. इट्स डिकम्पोज्ड इनटू द सॉइल बाय अ नेचुरल एजेंट such as weather, water, air, heat, microorganisms. Biodegradation क्या होती है? Decomposition of garbage or the waste material by living organisms or the biological processes is biodegradation. To know more about it, there are certain links we'll be sharing. And now frequently asked questions on the CBSE class 10th science board examinations on the environment. तो अब देखिए कुछ questions है जिसे बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है हमने. और अभी आप नोट्स ले लीजिए. एंड इफ़ यू आर इवन पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वाचिंग इन तो स्क्रीनशॉट्स या फिर ये लिंक को आप सेव कर लीजिए एंड यू कैन शेयर इट. ये यूट्यूब पे रहेगा फॉर एवर. तो आप ऐसा मत सोचिए अभी स्टूडेंट्स ने क्लास मिस कर ली है तो दे विल बी एट सर्टन लॉस. एंड जो हमारे एक्सक्लूसिव पेट्रन्स और हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं दे विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस फॉर अ लाइफ टाइम. सो देखिए what are the different types of landforms present in our environment? बहुत important question है. So, mountains, hills, plateaus, and plains are the four major types of landforms which are majorly present in our environment. ये बड़ा important aspect है, बहुत important एक topic है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिथोस्फेयर. अब हम बात करेंगे लिथोस्फेयर की. और देखिए 3-4 रेल्म्स हमारे पास है. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, आइनोस्फेयर, बायोस्फेयर. तो ये सब पता होना चाहिए हमें कि क्या क्या है. द लिथोस्फेयर इज द रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ द ब्रिटल क्रस्ट and the top part of the upper mantle. So, the lithosphere is the outer part of the crust. It is the rocky outer part of the earth. It is made up of the brittle crust and the top part of the upper mantle. That is exactly what lithosphere is. So, lithosphere is like a greater detail. इसे आपने ध्यान रखना है. And one last question, last but not the least, ये बड़ा important है. Where is biosphere present? Biosphere को हम realm of life भी बोलते हैं. The biosphere makes up the portion of the earth where life exists. So biosphere में atmosphere आ जाएगा, lithosphere आ जाएगा, hydrosphere भी आ जाएगा. तभी वो एक force of life है और present होता है जहाँ पे earth है. लैंड में भी, एयर में भी, वाटर में भी. सो दैट इज बायोस्फेयर. सो ये था हमारा आवर एनवायरनमेंट का टोटल डीकंस्ट्रक्शन. सो स्टूडेंट्स अगर इससे भी अच्छे से पढ़ ले, इससे नोट्स बना ले, so I guess this would be most of the preparation for board exams, and we'll keep coming up with the Mahurat batch daily and try to serve the students at our best. So kings and queens of Palace of Words, let's build this world, better, beautiful and divine.
एंड आप सब कनेक्टेड रहिए. इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर where we see, an influx of students on our stream. And please power up and support our Fund a Plant initiative too, and rather join us for the tree plantation drive. ये बहुत important है, and ऐसे initiatives really help us empower, this great deal of things. तो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो हमारे पर्यावरण के प्रति, और कुछ ऐसे काम करें, ऐसी एजुकेशनल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स हो जो सेफगार्ड करे हमारे घर को, हमारी इस धरा को, हमारी पृथ्वी को. और ये चीज़ें हो पाए कि हमारा घर, हमारी धरोहर सिर्फ हमारे तक सीमित ना रहे, हमारी फ्यूचर जनरेशन, उनकी फ्यूचर जनरेशन्स भी यहीं रहे, और ये हमारा घर रहे till the end of civilization, till the end of time. और छोटे छोटे एक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट. आप अगर कुछ भी ऐसी चीजें करो, ऐसे एक्शंस करो जो आपको लगे यार एक छोटा सा मैंने कागज का टुकड़ा कहीं फेंक दिया तो इससे क्या हो जाएगा, सभी तो गंदा करते हैं, सभी तो ये चीजें कर लेते हैं. अगर ये मानसिकता अभी हम 145 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, और बिलियंस ऑफ पीपल पूरी दुनिया में हैं, अगर हम इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो हम कुछ एक चेंज मेकर नहीं बन पाएंगे. सो आइडिया इज, लर्निंग एंड गेटिंग बेटर विद इट. जो हमारी शिक्षा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज द फोर एंड द कोर. तो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें अपनी शिक्षा को, अपने संसाधनों को, बेटर बने, और इस एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन को आगे ले जाए, और एक सही मायने में वी बिकम गुड सिविलियंस, वी रियली बिकम लाइक द ग्लोबल सिटीजन्स हु लव देयर होम. जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि सज्जनानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनके लिए पूरी धरा, पूरी पृथ्वी ही उनका घर है. एंड आई बिलीव वी हैव टू लिव अप टू दैट नेम, एंड वी हैव टू रियली add to this revolution. तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये काम करें, हम इस पे पूरी तरह से डिवोटेड रहे, पूरी तरह से डिवाउट और सिंसियर रहे, टू कैरी ऑन दीज नोबल इनिशिएटिव्स. एंड आपके पास, हमारे पास स्पेशल टॉपर नोट्स भी है. अगर आप हमारे नोट्स अवेल करना चाहते हो, सो वी आर गिविंग इट एक्सक्लूसिवली फॉर आवर स्टूडेंट्स जो हमारे साथ एनरोल्ड है. उनके लिए नोट्स इज पार्ट ऑफ अ पैकेज. अगर स्टूडेंट्स हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विविड प्राइस ऑफ ₹99 में पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस नोट्स है. So you can avail us, you can avail our special handwritten notes of the faculty. आपको हम जो notes देंगे, they are not any typed kind of a notes, या हमने वो खुद वो notes हमारी टीम ने बैठकर बनाए हैं, चॉक आउट किए हैं, और वो काफ़ी frequently board exams में आते हैं. So you can always provide, you can always get the notes as well. You can take these notes and you can take the most benefit out of those notes. So yes, let's take this vision and the mission forward. और 23 अगस्त की जो ये हमने मुहिम अभी छेड़ी है, ये क्लीनलीनेस और ट्री प्लांटेशन ड्राइव की, let's make it a great success, let's make it possible, let's make it more alive, more energetic, more love filled, enthused with life, and here to protect and nurture and safeguard and secure. So let's carry on with this beautiful vision. And it's such a pleasure to have the support from you all in these streams. Your support and the love is the wind beneath our wings. तो हमें आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सेफ गार्ड करते रहिए. एंड अब बहुत अच्छा लगता है स्ट्रीम पे आना, टू शेयर माई व्यूज़. एंड थैंक यू फॉर लेंडिंग योर वंडरफुल टाइम, योर पीसफुल ईयर्स टू अस. Such initiatives make these things really more impactful and really filled with love and life. जुड़े रहिए पैलेस ऑफ वर्ड्स के साथ, ब्रह्ममुहूर्त बैच के साथ. लेट्स डू मिरेकल्स टुगेदर. और शिक्षा को सही मायने में हम प्रैक्टिकल भी साबित करते हैं. लेट्स मेक इट मोर वंडरफुल, लेट्स मेक इट बेटर, एंड लेट्स टेक आवर लव फॉर द मदर अर्थ हायर.
और पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, सोच के पढ़ते हैं और इस इनिशिएटिव को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड इस अपनी धरा को और खूबसूरत बनाते हैं, संवेदनशील होकर प्रार्थना करते हैं जिन्होंने बड़ा कुछ खोया इस प्राकृतिक आपदा की वजह से, और उनके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, कार्यरत होते हैं अच्छे कामों के लिए, अच्छे कामों के प्रति, अच्छे अवसरों के प्रति। और हम अगर एक चेंज लाना चाहे तो वो चेंज एक्शन से आता है। सो तत्पर रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, प्रबुद्ध रहते हैं अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इस जागरूकता को फैलाने के लिए। एंड यस, वन लास्ट टाइम, टुगेदर वी बिल्ड आवर पैलेस ऑफ वर्ड्स बिगर, बेटर, ब्यूटिफुल एंड डिवाइन। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमेशा जुड़ने के लिए। हर हर महादेव।